ओके, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम। तो अपने जरा ऑन करो वीडियो सभी। ओके, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? Okay, we are doing these. सर आपने की नहीं भेजी थी? हाँ, की नहीं भेजी थी आपने? अच्छा की, हाँ कोई बात नहीं। की है कहाँ गए वो क्वेश्चन? चलो मैं की अभी दे देता हूँ तुम्हें। चलो मैं व्हाट्सएप पे कर दूंगी, मुझे ध्यान नहीं रहा। ठीक है, अभी है ना मेरा फोन थोड़ा। ठीक, अब वो तो इजी था, तुम्हें तो पता होना चाहिए कि क्या होनी चाहिए। फिर भी मैं दे दूंगा क्योंकि वो काफी इजी था। तो हमने वो जॉर्डन वॉन न्यूमन कर दिया कि वो पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी कैरेक्टराइजेस which norms are induced by an inner product, वो हमने किया था। फिर हमने उस पैरेललोग्राम लॉ की मदद से ये कर दिया। सभी कैमरा ऑन करो ना, ये कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम्हें? ओके, so let us start. Okay, let me share the screen. तो हमने किया था ये, क्या किया था हमने किया था if you have a closed convex set C in a Hilbert space, और convex set मैंने बता दिया था थोड़ा, what do we mean by convex set? In a normal linear space, in a vector space actually, it has got nothing to do with the norm. It has got a lot to do with the norm, but definition has got nothing to do with the norm, the convexity. So definition can apply to any vector space, the idea of convexity. But if it is a Hilbert space, then if it is closed and convex, then it इसका जो infimum है, मतलब D अगर है infimum of these norms, the smallest norm, x belongs to C, then indeed there exists some unique x naught belonging to C, such that norm of x naught is equal to D. So that's what we did. और of course अगर मतलब ये जरूरी नहीं है, अगर तुम्हारे पास suppose open interval जो मैंने कहा भी था, suppose 2 to 3, right? Infimum of the lengths क्या है यहाँ पे? अगर C है ये, what is, अगर मैं तुम्हें कहूँ D is equal to infimum of the lengths of x such that x belongs to C, of course it's a convex set, right? It's a convex set of real numbers. मैंने open interval लिया, लेकिन मैंने close नहीं लिया. And as you can see, what is this infimum? What is the infimum of the lengths of the numbers? Is 2, है ना? It is 2. Infimum of this set is 2. So therefore, because it is positive, तो उनकी lengths भी वही होगी. So it is 2. But there exists no, कोई ऐसा number नहीं है. There exists no x naught belonging to C such that norm of x naught is equal to 2. या length of x naught is equal to 2. So it's not attained usually the norm. अब ये तो खैर ये सेट कॉन्वेक्स है because it's the interval, है ना? इंटरवल होने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें कोई पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, उसके बीच वाले जो पॉइंट है वो भी उसी में है. So it is a convex, but it's not a closed set. लेकिन in a Banach space, you could have a closed भी होगा, वो convex भी होगा, right? But उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं होगी. It need not have a vector जो होगा infimum of the lengths of those vectors. अब मैं तुम्हें वो एग्जाम्पल बताता, लेकिन वो थोड़ा सा अभी let's leave it for a later stage. ठीक है ना, जब हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे
but we can take it to be, you take real valued functions, continuous real valued functions on 0 1 under sup norm. It is indeed a Banach space, यानी I mean x अगर मैं लेता हूँ ऐसे f such that f is a continuous function on 0 1 to the set of real numbers, right? मैं लिखता हूँ f is continuous. It is a Banach space, and we can show that अगर मैं c लेता हूँ set such that f belongs to x, f of 0 is equal to 1, and 0 to 1 f dt is equal to half. So C is closed, convex, and there exists no x belonging to C. There exists no x not belonging to C, f not belonging to C, such that one. Let me drop it. तो ये बानाक स्पेस के लिए इन जनरल ट्रू नहीं है, लेकिन हिल्बर्ट स्पेस के लिए है. In fact, uniformly convex spaces के लिए भी है. Then C is closed and convex inside. In X, the Banach space, और ऑफ कोर्स बानाक स्पेस ये तभी है जब मैं ले रहा हूँ इस पे सुप नॉर्म, तो यहाँ X पे मैंने सुप नॉर्म लिया है. But there exists no f naught belonging to C such that norm of f naught is equal to t, which is equal to infimum, or of norm of f, of course ये sup norm है, such that f belongs to C. ये जो हमने अभी प्रॉपर्टी की, ये जरूरी नहीं है कि ट्रू हो फॉर अ जनरल बानाक स्पेस, और एग्जांपल ये है. और लेट मी लीव इट एज, तुम इसको कोशिश करो करने की, और अगर जब ना कर सको तो मुझे बताना, ठीक है? क्योंकि अभी मैं इसको रहने दूंगा, क्योंकि हम हिल्बर्ट स्पेसेस में है, तो हम थोड़ा हाँ लेटर करेंगे. तुम इसको ट्रू कर, मतलब प्रूव कर that this is a closed set, it contains all its limit points, this is a convex set. कॉन्वेक्स ये प्रूव करना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये वाला थोड़ा सा तुम्हें करना. nevertheless हम आगे जाएंगे. So we did this. फिर एक और चीज है कि what we call compactness जो है ना, compactness जितने हमारे जैसे कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है टोपोलॉजी में? व्हाट इज अ कॉम्पैक्ट सेट? कोई कवर एग्जिस्ट करता है और ओपन कवर, और उसका भी कोई सब कवर एग्जिस्ट करता है जो कि उस सेट को कवर करता है. यानी हम कहते हैं a set C in a topological space is compact if and only if every cover of C can be reduced to a finite subcover. ओके, एक्चुअली ये होता है कि फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में finite dimensional spaces, of course every normal linear space जो है वो एक metric space है, topological space है, तो हम उसमें compactness की बात कर सकते हैं. So a set is compact if and only if
it is closed and bounded. Infinite dimension space. In metric space, अगर कोई metric space है, तो we say a set is compact if it is complete. If it is complete, मतलब every Cauchy sequence converges inside it, and totally bounded. You can always find a finitely many epsilon balls so that it's contained inside that. So union of those finitely many epsilon balls. यानी totally bounded, अगर totally bounded पढ़ा होगा ना तुमने metric spaces, ये तो उसमें important है. अब मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि in general जो है, जो हमारी infinite spaces है, मतलब infinite dimensional spaces है, उसमें compact sets कम होंगे, क्योंकि जितनी बड़ी टोपोलॉजी होगी कॉम्पैक्ट सेट्स उतने ही कम होंगे, क्योंकि फिर मतलब कवर्स भी उसी हिसाब से बढ़ेंगे ना. जितने ज्यादा ओपन सेट्स हैं उतने ही पॉसिबल कवर्स हैं, और फिर यू शुड बी एबल टू रिड्यूस एवरी कवर इनटू अ फाइनाइट सब कवर, है ना. सो देयरफॉर मतलब compact sets would be fewer, rarer in infinite dimensional spaces. For example, अगर तुम लोगे ये सेट, मान लो L2 ले लेते हैं हम, या sequence space. L2 is a Hilbert space, we now know that, right? We've got xi, the scalar, and summation modulus of xi square, I runs from 1 to infinity, is less than infinity. तो हमें पता है इस पे एक इनर प्रोडक्ट है automatic, that's xy is equal to summation xi yi bar, I runs from 1 to infinity, and इसका जो norm इनर प्रोडक्ट से हमें मिलता है, norm 2 is equal to plus positive square root of xx, that would be summation mod xi square, I runs from 1 to infinity, whole base power. अब इसमें एक सिंपल सेट लेता हूँ, यूनिट बॉल, ऐसे सभी वेक्टर्स x such that norm of x is less than equal to 1. Of course, this set is closed and bounded, but it's not compact. Because if it was, now since x is a metric space, so, and bx is a subset of x, therefore bx is compact if and only if it is sequentially compact. ये तुमने किया होगा, sequentially compact. That is, sequentially compact का मतलब every bounded sequence has a convergent subsequence. तो अगर ये compact होता तो ये sequentially compact होता, क्योंकि ये metric space के अंदर रहता है. अगर sequentially compact होगा तो इसका मतलब इसमें जो भी bounded sequence होगी उसकी एक convergent subsequence होगी. तो लेकिन that's not true, but that's not true. Now bx, now let xn be a sequence in bx with xn equal to 0, 0, so on and so forth. 0, 1, 0, 1 is at the end place. यानी अगर मैं इसमें एक sequence लूं, of course it is a space of sequences, तो sequence would be a sequence of sequences. So therefore I have a sequence like this, x1 have 1, 0, 0, so on and so forth, zeros
then x2 would be एक सीक्वेंस है inside bx, है ना, इस यूनिट क्लोज्ड बॉल में ये जो बड़ा ही अच्छा सा सेट था जो कि फाइनाइट डायमेंशंस में ऑटोमेटिकली कॉम्पैक्ट होता, लेकिन इन्फिनिट डायमेंशंस में आई हैव गॉट अ सीक्वेंस इनसाइड इट, राइट, which has no convergent subsequence. ये जो है इन सब का norm 1 है, but it doesn't have a convergent subsequence because but xn now xn is a bounded sequence and but it has no convergent sequence. It has no convergent subsequence because it has no Cauchy subsequence. बिकॉज अगर इसकी कोई कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होती तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोशी, तो वो कोशी सबसीक्वेंस होती। व्हाई? बिकॉज रीजन ये है कि नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एम 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 फॉर ऑल एन नॉट इक्वल टू एम। ये होगा ना ऐसे, इट वुड बी 0 0, then I would have some 1 at nth place, right? Then 0 0 0 and xm would be इसी तरह से 0 0, फिर 0 0 1 would be at some mth place। अब जब इनका डिफरेंस करेंगे वो बनेगी सीक्वेंस ऑफ दिस टाइप, उसमें एक जगह 1 है, दूसरी जगह -1 है, बाकी सब 0 है। so this would be my xn minus xn। और अगर मैं इसका नॉर्म लूं, इसका नॉर्म होगा it would be 0 square, सब का स्क्वायर कर दो, यानी 1 square plus -1 का स्क्वायर and then take the square root, तो वो होगा √2। so it's fixed for n not equal to m। तो कोशी सीक्वेंस क्या होती है, जब हम n और m बढ़ाते जाएं तो दिस शुड बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर, लेकिन वो तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी दो सीक्वेंसेस अगर तुम लोगे और उनके जो डिफरेंस जो है नॉर्म का वो √2 होगा, which does not change। therefore px is not compact in L2। कहने का मतलब जो 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 क्या बोलते हैं इसको, तो कॉम्पैक्ट सेट्स जो होंगे वो मतलब जो यूजुअली कॉम्पैक्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन अ फाइनाइट डायमेंशनल केस, इनफिनिट डायमेंशन में वो पॉसिबल नहीं है, राइट? So, but under certain conditions on a normal Dirichlet space, Bx can be compact under a smaller topology। In a topology अगर small हो तो compactness sets के compact होने के chances बढ़ते हैं, क्योंकि of course because जो condition है compactness की वो है कि every cover has to be reduced to a finite subcover। तो जितने ज़्यादा cover होंगे उतने ज़्यादा problems होंगे, right? उतना ही हमें दिक्कत होगी वो सबको reduce करने में, मतलब इस possibility में कि that they can be reduced to a finite subgroup। Okay, पता नहीं ये कैसे आ गया। हाँ, actually I wanted to show that there is a set called Hilbert cube is compact subset of L2। So let us do that as an exercise। The set, इसको हम कहते हैं Hilbert cube। Hilbert cube ऐसा है C, इसको मैं डिनोट करता हूँ C से, it's all sequences inside L2, they belong to L2 such that इसके जो numbers, इसकी जो entries है, they are less than equal to 1 by n for all n running from 1 to so on and so forth। This is a compact subset of L2।
अब इसका मतलब ये ऐसी सीक्वेंस है, इसका जो पहला एलिमेंट है या पहली एंट्री है दैट्स लेस देन इक्वल टू 1, दूसरी एंट्री जो है वो है लेस देन इक्वल टू 1/2, तीसरी एंट्री जो है वो है लेस देन इक्वल टू 1/3। तो इस तरह से ये सिचुएशन है, ठीक है। नाउ मतलब सोल्यूशन में हम दिखाएंगे फर्स्ट दैट C is closed in L2, ठीक है। सो क्लोज्ड है तो उसके लिए क्या दिखाना होगा कि अगर कोई सीक्वेंस हो, अब इसमें हमें दिक्कत है कि मतलब it contains all its limit points, right? So let x belong to C closure, हमें दिखाना है ये C में होगा, और चूंकि मेट्रिक स्पेस के अंदर है implies that there exists a sequence। अब यहाँ पे मैं इंडेक्स थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा, राइट। should I write xm, चलो xm रखते हैं, xm इंडेक्स हमने m लिया क्योंकि n यहाँ पे कहीं पे यूज हो गया है, तो xm is a sequence, it's a sequence of sequences inside C such that norm of xm minus x2 norm goes to 0, yeah, should I write, हाँ ठीक है, goes to 0 as m approaches infinity। अब जो ये सीक्वेंस है it implies that, should I write it like this, तो हम दिखाएंगे ये जो ये सीक्वेंस है, now what is x, x is a sequence, this is a sequence, now what we do, it's a sequence of sequences, तो therefore जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था, हम इसका लोअर इंडेक्स रखेंगे सीक्वेंस का इंडेक्स, अपर होगा सीक्वेंस का। बुरा जो हम करते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट है सोचना, बट यू कैन डू दैट। मेरे कहने का मतलब है इसके कंपोनेंट्स को मैं ऐसे लिखूंगा, एक्स एम आई माइनस एक्स आई स्क्वायर, I runs from 1 to infinity, whole raised power 1/2 is actually less than epsilon, right? चलो मैं रूट ऑफ एप्सिलॉन करता हूँ ताकि मैं स्क्वायर खत्म कर सकूं। Now what I do is this, should I write it like this, चलो ठीक है, चलो मैं इसको पहले मैं लिख देता हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन न रहे। वायर एक्स एम जो है एक्स एम आई या एक्स एम लिखते हैं, इट इज इक्वल टू एक्स एम वन एक्स एम टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। नहीं, इसका जो सीक्वेंस वाला इंडेक्स वो नीचे है। मेरे कहने का मतलब है इस सीक्वेंस की पहली सीक्वेंस, बिकॉज इट्स अ सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस, इट विल बी x11, इससे पहले हम कर चुके हैं, तो आई हैव टू सॉर्ट ऑफ, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये ताकि इस तरह से, सॉरी, इसी तरह से तीसरी, मतलब दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंसेस, और ऑफ कोर्स x ये है हमारे, ये इसका हिस्सा नहीं है ना प्रूफ का, xm इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू, लेट मी कॉल इट x1 x2 सो ऑन सो। तो ये जो डब्बे में मैंने रखा, इट्स नॉट पार्ट ऑफ प्रूफ, इट्स जस्ट कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो हेंस मैं कह सकता हूँ फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट n naught belonging to the set of natural numbers such that norm of xm minus x2 is less than epsilon for all n bigger than equal to n naught, which would imply that, what would imply, वही जो मैंने पहले लिखा था, summation, चलो रूट एप्सिलॉन कर देते हैं, फिर इसका स्क्वायर लेस देन, तो फिर it would imply that xmi minus xi का स्क्वायर I runs from 1 to infinity is less than epsilon for all, यहाँ जरा m लगाता हूँ मैं क्योंकि मैंने m लिया था, ठीक है, तो once I've done that, अब इस sum of squares is less than epsilon, right?
तो because it is sum of negative numbers, तो सारे के सारे less than epsilon होने चाहिए. And I should have xm minus, चलो एक चीज करते हैं, इसको epsilon ही लेते हैं, ठीक है ना. तो this is less than epsilon, so this would be less than root epsilon. चलो ऐसे, ये थोड़ा एडजस्टमेंट है epsilon को, ये हम करते रहते हैं. It means that xmi minus xi square is less than root epsilon for all m greater than equal to n naught, which would imply that xmi minus xi and for all I greater than equal to 1 is less than epsilon for all n greater than equal to n naught and for all I greater than equal to 1. Now what I do, now we know that क्योंकि जो xm sequence है, it belongs to C, so it means that xim is less than 1 by I for all I and for all m greater than equal to 1, because that's how they are. It implies that mod of xi जो है, it is less than or equal to xi plus xim minus xi, that is just the triangle inequality, which is less than equal to 1 by I, less than actually, plus क्योंकि मैं यहाँ epsilon भी ले लूँगा, for all m greater than equal to n naught and for all I. And since epsilon is arbitrary, because this is true for all m, right? तो मैंने क्या किया, xim मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, क्यों? क्योंकि मैंने xi लिया यहाँ पे, xi कैंसिल हो गया, तो it should be xmi होना चाहिए ना, मतलब तभी तो बराबर होगा. xmi is less than equal to this, so this is true for all m greater than equal to epsilon, right? It implies that कि xi जो है, it should be, since this epsilon is arbitrary, it means it should be less than equal to 1 by I for all I, which means that x must belong to C, right? After a certain stage, right? So I should have xi is less than or equal to 1 by I. Okay, so therefore C is closed. It contains all its limit points. ये तो simple वाला था, इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना था. That it was indeed closed. Okay. Next जो है, now what we do, hence I can say C is complete because C is closed subset of the Banach space X. Right? Once I am done. ठीक है. So once I am here, तो ये हो गया. तो now I want to show that it's also totally bounded. तो अगर मैंने दिखा दिया ये complete और totally bounded है, in a metric space, a set that is complete and totally bounded is actually compact. तो वही हम करने वाले. Now let epsilon be positive and fix. Now we can find n belonging to set of natural numbers such that
summation k runs from n plus 1 to infinity 1 by k square या I square whatever, चलो I लेते हैं, वैसे तो I ही रखते हैं। तुम सोचोगे k कहाँ से आ गया? Okay, I runs from 1 to n, तो यहाँ I square can be made arbitrarily small because it is the tail of a convergent sequence, because summation 1 by I square is less than infinity. So after a certain stage, it can be made smaller than any positive number. इसका जो remaining tail है, इसका जो sum है. Now let A be finite set x1, मतलब subset of Rn such that xi जो है वो less than equal to 1 by I, 1 less than I less than equal to n, then A is closed and bounded, because finite dimension में closed and bounded compact होता है, so it is a compact subset of Rn. Now अब हमें थोड़ा सा काम करना है. Now let, थोड़ा सा यहाँ notation का change है, but you just manage. Now put x1, take x1, yeah, we can pick x1, x2, मतलब मैं n tuples ले रहा हूँ, n tuples in A such that A is contained in union I runs from 1 to n B epsilon xi. And you have to remember these are tuples. x1 would be a tuple of this type, x11 up to x1n. तो चूंकि ये bounded है, तो ये totally bounded है. So I can just find an epsilon length which मतलब finitely many epsilon. This is the definition of total boundedness. तो यहाँ हम लिखेंगे, वो तुम फिर से metric space में देख लेना. Boundedness implies total boundedness. I have used that, then A must be totally bounded. Now for each of these i's lying between 1 and n, let yi be equal to x1i. मैंने इनकी मदद से अब सीक्वेंसेस खड़ी की. x1i है, फिर क्या किया, x2i है, अप टू xni है, उसके बाद 0 0. अब ये जो है अब ये जो सीक्वेंस है, इट हैज गॉट, ये जो मैंने यहाँ नंबर्स लिए ना, ये m नंबर्स, कहाँ गया मेरा, ये जो यहाँ ये है ना n, आई हैव गॉट n टपल्स. जो x1 जो है इट्स एन n टपल, उसकी मदद से मैंने एक सीक्वेंस बनाई, x2 से एक और सीक्वेंस, xm से एक और सीक्वेंस. सो आई हैव गॉट m sequences of these n tuples followed by 0 0 0, and of course they lie inside L2, you know, because they are summable. It's a finite sum, square summable. So once we have done that, now since A is contained in union of these epsilon balls पता है ना, the epsilon xi, जो मैंने यहाँ लिखा था, epsilon I means जब मैं कहूँ the epsilon x, उसका मतलब होता है ऐसे सभी y belongs to x such that norm of y minus x is less than epsilon. Okay, so I've got A is contained there. It implies that for each x equal to x1, x2, so on and so forth, xn,
xk is less than equal to 1 by k, क्योंकि a को हमने वैसा ही सेट बनाया था, राइट, is contained here. So a ऐसे हैं क्योंकि राइट xi's are less than equal to 1 by I, तो ऐसे हम लिखेंगे इसको। तो अब चूंकि इसमें है a में, for each x I should have xk is less than equal to 1. Let me write it. चलो मैं ये जरा डिलीट कर देता हूँ, ना थोड़ा नोटेशन का चक्कर है। So for each x belonging to a, जो कि एक n टपल होगा, there must exist, मतलब obviously अगर ये a में है तो किसी न किसी b epsilon x में है, तो इसका मतलब ये हुआ I should, मतलब x a is contained in this union, तो x must belong to some b epsilon xi, और ये जो xi's है they are of this type, xi's जो है वो इस टाइप के हैं। तो मेरे कहने का मतलब शॉर्ट में ये है, for each x it must belong to some union, so therefore for each x, ऐसे मैं नहीं लिखूंगा, a में कैसे सेट है, हाँ बिल्कुल सही है, that is for each x we have, लिखने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में रख सकते हैं, xi is less than equal to 1 by I. There exists xi a sequence where 1 is less than I is less than equal to m, one of the m sequences, such that norm of x minus xi in second norm is less than epsilon. तो वही मैंने कहा ना, this should be less than epsilon. तो अगर ऐसा है तो इस तरह से for x is this, xi is less than equal to 1, थोड़ा सा मैं मानता हूँ थोड़ी सी दिक्कत है, but you would bear with me. It means summation k runs from, इसके भी any components है, इस पे भी any components है, k runs from 1 to n mod of xi minus x, चलो k ही लिखते हैं, मुझे लगता है यहाँ k ही लिखो, i के साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है फाइन, क्योंकि यहाँ i इधर है, xi ठीक है is less than epsilon square, यहाँ स्क्वायर कर देते हैं, इट्स लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, थोड़ा सा टीडीएस है बट आई थिंक यू कैन डू इट, कोई बात नहीं। सो आई हैव गॉट दिस, वंस आई हैव डन दैट हमारा ऑलमोस्ट कुछ हो गया है। सो इट इंप्लाइज दैट फॉर ईच x equal to x1 x2 up to so on and so forth, a sequence belonging to C, यानी जिसका nth component less than equal to 1 by I है, norm of x minus yi का मतलब वो सीक्वेंस ये वाली जिसके पहले n कंपोनेंट्स ये x1i x2i xi है, उसके बाद 0 0 0 है, राइट, ये वाली सीक्वेंस, यानी इसमें तो खाली फाइनाइट सम आएगा, यानी इट शुड बी समेशन k रन्स फ्रॉम 1 to infinity xk minus xki, लेकिन ये तो फाइनाइटली नहीं है, सो it should be just summation k runs from 1 to n, थोड़ा सा लंबा चौड़ा था ये, तो यहाँ होना चाहिए स्क्वायर, चलो यहाँ इसका स्क्वायर कर देते हैं ताकि ये स्क्वायर रूट सॉर्ट आउट हो जाए। सो ये अप टू n है, तो प्लस मैं लिख सकता हूँ समेशन k रन्स फ्रॉम n plus 1 to infinity xk minus xki का स्क्वायर। अब थोड़ा हमारा इसको हमने ब्रेक किया इनटू टू सम्स, नाउ आई नो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि हम ये कर चुके हैं, यहाँ पे पहला वाला सम इज लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर, यस, तो पहला हिस्सा तो लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर है, बचा ये x के का, तो इसके बाद 0 है, सो इट इज जस्ट समेशन k रन्स फ्रॉम n plus 1 to